हेलो दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग्स फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज मनी हाइस्ट। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। प्लानिंग प्लेज अ मेजर रोल इन अचीविंग योर गोल्स and we all know who is the master planner in Money Heist, the professor. And in this video we are going to learn 6 amazing skills which will help us to become a mastermind like a professor. So if you want to become a mastermind like a professor, watch this video till the end. Point number 1, become an expert. Friends, why do we call professor the master planner? Because he is expert in the heist. He is not a computer hacker, he is not a scientist, he is not a dancer. He is expert in his field. That's why we call him the master planner. इसी तरीके से जब हम कोई भी फील्ड में एंटर कर रहे हैं, we have to understand that we will have to do such kind of research, we will have to gather such kind of information that people should look at us as an expert of that field. And like what professor did, we will also have to anticipate risk, opportunities, threats regarding that subject. Because एक मास्टर प्लान वही होता है जिसके कोई लूज एंड्स नहीं होते. पॉइंट नंबर 2, रिमेन रिलैक्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा दोस्तों, भले वो नेगोशिएशन कॉल हो, नैरोबी की डेथ हो या फिर लिस्बन का एग्जीक्यूशन ड्रामा, प्रोफेसर जितना मर्जी अंदर से टूटा हुआ हो बट वो तब तक फाइट करता है जब तक सिचुएशन उसके फेवर में नहीं आ जाती. एंड ही कुड ओनली डू दैट बिकॉज he has developed the skill to remain relaxed in difficult situations. Because only a relaxed mind has the potential to get you out of challenging situations. And even the study by Talent Smart shows that 90% of the performers are on the top because they could develop this skill to remain calm and relaxed in challenging times. So if you want to become the master planner, first relax your mind. Point number 3, work out regularly. Once Mahatma Gandhi said, it is the health which is the real wealth and not gold and silver. And the professor is in the same direction. क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, no matter what the situation is, we have seen professor doing workout, practicing martial arts and doing meditation, which helps him to keep his mind and body fit. और वर्कआउट करने से दोस्तों कुछ ऐसे सेल्स डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में जो हमको किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए ताकत देते हैं. So keep a routine of working out every day, maybe even 20 minutes, but it will help you to achieve your goal. Point number 4, patience is the key. Patience is the key to success. Robert Greene once shared in his book Mastery. No one can achieve mastery in one day. It takes hours, days, and maybe years of dedication and hard work. And that is what we can learn from Professor in the Money Heist. Professor has plan A, B, C, D for every kind of situation. But he is not eager to execute every plan. He analyzes the situation and he waits for the right moment for the right kind of plan. Point number 5, have knowledge about related fields. Though Professor was expert in the heist, yet he has the knowledge about government rules and regulations, forensic reports and martial arts. So we should always have the knowledge about related fields. This way your success will never be dependent on anyone. Point number 6, flawless execution. दोस्तों जितनी इम्पॉर्टेंट प्लानिंग है उतनी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जीक्यूशन, और ये प्रोफेसर को बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए वो छोटी से छोटी चीज़ पे बहुत अच्छे से वर्क कर पाया. एक फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू स्टिक टू द प्लान अंटिल द नीड अराइजेज. सेकेंडली, यू हैव टू ट्रीट योर टीम मेंबर्स एज फैमिली मेंबर्स, और उनका ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आप पे ट्रस्ट करें, बिकॉज अंटिल यू गेन द ट्रस्ट ऑफ योर टीम मेंबर्स योर प्लान माइट फेल. And thirdly, it is very important to closely monitor your plan, which the professor did. At every step, professor अपने plan पे बहुत ध्यान से work कर रहा था और उसको monitor कर रहा था, and जहाँ required था वहाँ उसको rework भी कर रहा था. To achieve your goal, execution process plays a very major role. तो दोस्तों ये थे 6 points प्रोफेसर की जिंदगी से जो अगर हम अपनी जिंदगी में implement कर लें तो हमारे efforts के results totally change हो जाएंगे. So let's be the professor in our fields, because the success is waiting for us.